Students, let's move to the question number 3. As a citizen of Pakistan, what are your duties towards your country? Students, in this question, writer is asking, or we can say writer is throwing the ball in your court, that what do you think that what can be the qualities of a patriot person, a good citizen? So this is purely a subjective question. It can be differ person to person. But for me, that if somebody asked me as a citizen of Pakistan, what are my duties towards my country? Then I will respond that as a citizen of Pakistan, it's my duty to be loyal to my country. First of all, मेरा ये फर्ज है कि मैं अपने मुल्क के साथ, अपने वतन के साथ लॉयल रहूं. Then we should be willing to sacrifice our everything for the sake of this country whenever need arise. जब कभी ज़रूरत पड़े तो हम अपनी जान माल सब कुछ इस वतन पे कुर्बान करने के लिए तैयार हों. ये वो बात आ गई कि जब वतन को ज़रूरत पड़ती है. अब एज ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान हमारी क्या ड्यूटीज़ होनी चाहिए? तो वो कुछ यूँ होनी चाहिए. अगर मैं एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हूँ तो सबसे पहले मैं जो काम कर रहा हूँ, जो मेरा प्रोफेशन है, उसके साथ मुझे लॉयल होना चाहिए. मुझे अपने मुल्क को गंदा नहीं करना चाहिए, जगह जगह कूड़ा करकट नहीं फेंकना चाहिए. आई शुड मेंटेन अ क्लीन एंड नीट एनवायरनमेंट. देन मुझे अपने यूटिलिटी बिल्स को टाइम पे करना चाहिए. मुझे अपने टैक्सेस अदा करने चाहिए. मुझे इस मुल्क के कानून को फॉलो करना चाहिए ताकि एक प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे. सो ये वो क्वालिटीज़ हैं कि वी शुड ओबे लॉ एंड ऑर्डर्स एंड वी शुड मेंटेन द क्लीनलीनेस इन आवर कंट्री. I hope you understand that what are your duties to be a good citizen of Pakistan. Thank you.